that is why in this paper the end should always be kept in mind. अगर हमें पता है कि एंड में ये होना है, तभी जो लोग दोबारा मेंस देते हैं वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक बार एक्सपीरियंस होता है. तो अगर हम ये एंड माइंड में रखें, मेरा भी इनफैक्ट एथिक्स में 100 मार्क्स ही हैं, लोगों के आए हैं ज्यादा. तो आई थिंक अगर मेरे को दोबारा देना हो तो मैं एथिक्स में बहुत आई वुड हैव डबल्ड डाउन माय एफर्ट, बिकॉज एथिक्स आते आते काफी फटीग हो जाता है. देन हर क्वेश्चन में जो थ्योरेटिकल वाले हैं उसमें सब कंपैशन इंटीग्रिटी लिख के आते हैं, भूल जाते हैं चीजें. तो ये हमें पहले बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जिससे वो ऑटोमेटिकली वो मसल मेमोरी में आ जाए, एंड देन वी एग्जीक्यूट दैट. Hello everyone, welcome back to the channel, and today we have with us Rajat Yadav, who scored AIR 111 in CSE 2022. So welcome Rajat, congratulations on the stellar rank. How do you feel? Thank you so much, sir, and thank you for having me. I feel great, and as I have said it multiple times, I have no words. The feeling is sinking slowly and steadily, but overall I feel excited to join the service and learn new things. So Rajat, tell me a little bit about your UPSC journey. कि कितने attempt आपने दिए, क्या रहा था, and मतलब what has been your learning through the journey so far? So I started preparing in March 2020. I quit my job. I was relieved in February 2020. Before that, I looked at for a couple of months. For January and February 2020, looked at optionals. But the GS started in March. Then I gave that year's prelims. I couldn't clear that. Then I gave my second attempt in 2021. I couldn't clear that either. So this time I cleared all three things, and even Indian Forest Service. Not just cleared it with a great rank. Thank you, sir. Yes, sir. I consider myself lucky. So these are some of the things that happened, and based on this, I have learned few things about me, about the exam, and how to go about it. And currently, as you said, I have secured AIR 111. And I also have my Forest Service interview on 15th, which I won't be giving for obvious reasons. But that was also something I consider myself lucky to be in. Right. So, मतलब how did you feel going from the first prelim, second prelims? क्योंकि मतलब देखो ये एक general वो रहता है काफी. I also had failed my first two prelims, and जो तीसरे prelims में जब जा रहे होते तो काफी mental pressure एक वो रहता है. Yes, sir. There's also that whole conversation that's going on in your head कि भैया दो बार तो fail कर चुके, अब क्या, इस बार क्यों लगता है तुम्हें हो जाएगा? Should you give this attempt? What was the conversation that you were going on in your head in your third attempt? So firstly, I kind of tried to put blinders along my eyes. That कुछ नहीं सोचना होता है, because ये तो हम फिर भी थर्ड अटेम्प्ट है. कई लोग फिफ्थ अटेम्प्ट तक नहीं निकालते, फिर एक बारी में सब हो जाता है. देयर आर लाइक न्यूमरस एग्जांपल्स. तो हमें वो देखना चाहिए. इट इज ऑल अबाउट हाउ यू लुक एट इट. So I think there are a number of strategies. I read about something called turning the problem upside down. So I just thought about it that way, that ये सोचना ही नहीं है, इस बार तो हो गई. Because I have kept things simple. I revised multiple times, which is the intersection of everyone's strategies. That revision is important, mocks are important, previous year questions I did thoroughly this time. So I was quite confident, and even like this was Shubham Kumar sir's strategy, who was AIR 1, that in last 1 week you have to revise everything. So I planned it that way. So that gave me like quite a confidence. And I even attempted the last 5-6 years papers again on the last 5 days. So just to acclimatize myself with the kind of language UPSC uses. So I was feeling quite confident, sir. And I think obviously, these are something. 2022 was the paper where they first introduced these, fancy options, one statement only, two only, three only. Right. Given that was the third time that you were giving prelims, and obviously you were confident, you were trying a lot of things. How did you feel when you sat in that paper and like you saw these new kinds of questions come up? Sir. So apart from the things like revision that I mentioned, I think one other problem which I faced in my previous attempt was to sort of losing it between the exams.
feeling the heat. It is like Between the quite exam matlab ki while you're sitting in one between, paper or between between break between the two papers? while solving the 2 hour Okay. GS paper itself. So because it is literally one of the warmest times of the year and you are sweating like anything, then the exam is giving you additional stress. Yeah. So I think we need to have an outlook towards that also. So this time I told myself before the exam that a lot of things will be like that, about which I don't know anything about. So basically, I had that approach. So even if I was seeing questions like this, like Like the one ones. only, two only, Uh, so I straight away like skipped them to move hmm. to the questions that I know. And there were some questions like static questions, basic Hmm. conceptual questions. I was able to attempt them and like quite quickly. Hmm. So this was one thing, and this gave me quite some time and mental space to figure out other questions. So I think one has to stick to the paper like quite rigorously. When we move towards the next question, we have to forget about the Hmm. previous question and try to do it in 2 3 attempts and just be at it, not like get stressed. So I think this attempts wala jo cheese that you mentioned. Now this is Sir, something that I've been talking about for a while now, and but still sometimes people come up to me and say कि sir attempt तो होता ही नहीं है. Round दूसरा round तीसरा round कैसे करे क्या करे? So sir. मतलब what's your advice to somebody who is let's say preparing afresh जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो भाई मतलब ये क्या है rounds वाला system and ये कैसे help करता है? So round wala system is, I think, based on a basic psychology that even if we are not looking at a question, but we have entered into that question, maybe 20 30%, we have applied our mind, and when we Hmm. move to next question, our like in the background things are happening. So Hmm. when we come to that question again after going through one round, Hmm. we might we might strike with some Hmm. logic or Yeah. something. ये होता है सर, एंड ये इवन ये मेंस में भी हो जाता है कि कुछ Hmm. बहुत पहले पढ़ा होता है वो एकदम याद आ जाता है, इंटरव्यू में भी हो जाता है. Hmm. आई थिंक इस पे है, एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. Hmm. हर साल टॉपर्स कहते हैं, पीपल बिफोर मी हैव सेड दिस, पीपल आफ्टर मी विल से दिस. So the thing is, the approach goes like, first round में we attempt everything. Hmm. We we like strike out anything which we feel is not right, or Hmm. if we are like 50 50, we draw something or we circle it. And if we are quite confident in that question, like out and out, we will attempt that. Hmm. Otherwise we will make maybe one circle and leave it for the second round. So after attempting such 100 questions, the preferred time is, let's say, 70 minutes if a person is trying to do it in 3 rounds. So Hmm. like I used to do it in 3 rounds. What extra I did this time was that the first round questions which Hmm. I have marked, which are maybe 25 to 30, I again revised them like in 2 minutes. Because बट ओएमआर the तो भर चुके हो या ओएमआर बाद में भरते हो? नहीं सर, मैं सेकेंड राउंड के बाद भरता था. ओके. तो जस्ट टू एलिमिनेट एनी सिली मिस्टेक्स, एक दो हो जाती है कभी कभी, तो हम्म. उसके लिए रिवाइज कर लेना चाहिए. ठीक है. then then second round is again, we have cut out some statements within हम्म. questions. Now we have to apply a little more of our brain. हम्म. And even now if we cannot solve it, we will put another circle and leave it for the third round. हम्म. Now इसमें around 50 or 60, around 60 questions will be completed in the by the फर्स्ट एंड second सेकंड round. राउंड. And when we mark the OMR, then हम्म. depending on how much time we have, we can directly look at the question and mark the OMR, which we have, the question which we have left for the last round. हम्म. So I think it goes like this. And this does not mean anything unless we uh, try to simulate this in mocks. And we understand how many questions of the first round we are getting right. हम्म. So based on this, we can like have the number of questions to be attempted. राइट. सो मतलब ऑब्वियसली यू थॉट अ लॉट अबाउट इट कि किस तरीके से Yes, प्रीलिम्स को sir. अटेम्प्ट करना चाहिए गिवन द फैक्ट कि भैया 2 बार झटका लग के फिर तीसरी बार इंसान Yes, sir. थोड़ा सतर्क रहता है. Right, सो sir. गोइंग इनटू योर फर्स्ट मेंस 2022 का जो मेंस था, व्हाट वाज Yes, द sir. आइडिया? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर मेंस? एंड लाइक ऑब्वियसली तुमने कुछ तैयारी पहले से कर रखी थी
ऐसा Yes, नहीं sir. था कि भाई जस्ट प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद तुमने मेंस शुरू किया एंड देन यू गॉट अ स्टेलर रैंक, बिकॉज दैट डज नॉट हैपन, रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ टाइम. Yes, sir. हाउ डिड यू गो अबाउट योर मेंस प्रिपरेशन? Sir, so my notes were prepared, हम्म. like almost 99% notes were prepared. So that was a plus point. So हम्म. during this time, my goal was to revise and maybe do some value addition from here and there, and then give the test, हम्म. get them evaluated, and slightly reorient my strategy. So this हम्म. was a simple approach. Now, as far as mock tests are considered, I gave around 8 GS tests, two हम्म. each for 1 to 4. I did not give PSIR test because I attempted PSIR test a year back. हम्म. So I thought I should prioritize my time. I hadn't done GS answer writing, and that हम्म. becomes quite a headache towards the end. Like solving 5 papers, including essay in 3 days, that itself is quite, like, mains is मेंस का 50% physical and सिमुलेटर एसेंशियली. 50%. Yes, sir. And हम्म. mains is 50% physical and 50% mental was, I think. दैट्स ट्रू, दैट्स एथिक्स ट्रू. के पेपर तक तो आते आते सब कुछ भूल जाते हैं, हाथ वाथ दर्द करने लगता है. मतलब तो भूल आई ट्राई जाते हैं टू के अलावा लुक भी नहीं, दैट. आई थिंक एक वो भी चीज होती है ना कि व्हेन यू गोइंग इनटू द एसे पेपर यू फ्रेश. GS 1 और 2 के लिए राइट. भी आप रिलेटिवली थोड़ा फ्रेश रहते हो क्योंकि एसे के बाद टाइम मिल जाता है. बट फिर 3 and 4 वाले दिन तक आते आते तो यू बीन राइटिंग फॉर 2 days ऑलरेडी. यस सर. एंड मतलब मेंटली काफी ड्रेन्ड हो, और उसके बाद भी तुमको चल रहा है कि भाई GS 3 का भी कुछ रिवाइज कर लेते हैं. एंड बाय द टाइम GS 4 कम्स अराउंड इज लाइक यार खत्म करो, चार यस और सर. देने हैं. डेफिनेटली. दैट इज व्हाई इन दिस हम्म. पेपर द एंड शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड. हम्म. अगर हमें पता है कि एंड में ये होना है, हम्म. तभी जो लोग दोबारा मेंस देते हैं वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक बार एक्सपीरियंस होता है. हम्म. तो अगर हम ये एंड माइंड में रखें, मेरा भी इनफैक्ट एथिक्स में 100 मार्क्स ही हैं, हम्म. लोगों के आए हैं ज्यादा. तो आई थिंक अगर मेरे को दोबारा देना हो तो मैं एथिक्स में बहुत, आई वुड हैव डबल्ड डाउन माई एफर्ट. हम्म. बिकॉज एथिक्स आते आते काफी फिटीग हो जाता है. देन हम्म. हर क्वेश्चन में जो थ्योरेटिकल वाले हैं उसमें सब कंपैशन इंटीग्रिटी लिख के आते हैं, भूल जाते हैं चीजें. तो ये हमें पहले बहुत बार हम्म. प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जिससे वो ऑटोमेटिकली वो मसल मेमोरी में आ जाए, हम्म. एंड देन वी एग्जीक्यूट दैट, आई थिंक. राइट. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, सॉरी यू, नहीं नहीं, गो ऑन. इसके अलावा ऐसे कि आई रोट 2 full tests. हम्म. These were तो the. आई थिंक two things over here. Number one, obviously you scored one of the highest marks in essay this year. Yes, sir. So please do tell us how much did you score and what was it that helped you, streamline that effort? Sir. So I scored 141, which are one of the highest. Mm-hmm. And I followed a simple, like, approach which I executed in my mock. I tried to execute them, those pointers in the actual essay. Mm-hmm. So what I used to do is that I was pretty confident of my writing, like essay writing, because I was getting good feedback in mocks. So I just tried to not overdo it. So that is one thing, that the number of essay mocks depend on the kind of confidence you have. You should not spoil it or complicate it. Secondly, sir, the approach, I used to start with an introduction, not really all an anecdote all the time. I try to innovate in, like, in the introduction, because ये चलता रहता है, हर 4 साल में कुछ एक नया डिसरप्शन आता है, तो सब वही फॉलो करने लग जाते हैं, तो काफी मैकेनिकल हो जाता है. तो यू कैन ऑलवेज मेक योर ऐसे नॉवल बाय इंट्रोड्यूसिंग सच थिंग्स. मैं उस पर आता हूँ एक बार इंट्रोडक्शन पे. एक और मैं चीज करता था कि जैसे पैराग्राफ्स होता है, एक काफी चीज चली थी कि 2 पैराग्राफ ऑन एवरी पेज. तो मैं जानबूझ के कुछ पैराग्राफ बड़े कर देता था जो अगले पेज पे चले जाए, फिर एक दो छोटे कर देता था. तो आई थिंक उसको एग्जामिनर को नहीं पता होता है कि आप 3rd अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट हो, 5th अटेम्प्ट वाले हो. लेकिन ऐसा इतना फॉर्मुलाइक सा हम अगर अप्रोच रखते हैं, तो उसको लगता है कि ये तो कुछ ऐसे बाद वाला कैंडिडेट है, और ये बस वही चीजें कर रहा है, मैकेनिकल सी चीजें कर रहा है. ये आजकल तो सिंस 2020 मल्टीपल टॉपर्स हैव सेड दैट ऐसे एग्जामिनर्स आर रिवॉर्डिंग लाइक नॉवेल्टी. So I think these two things were like kind of peculiar things I used to do. बाकी अप्रोच में सर इंट्रोडक्शन होता था, देन एक पैराग्राफ होता था जिसमें आई यूज टू से दैट दिस essay will explore this डायमेंशन. तो वहीं पे द एग्जामिनर
गेट्स द आइडिया कि हम क्या करने वाले हैं, तो एक अच्छी वो अप्रोच होती है। देन उसके बाद मैं थोड़ा हिस्टोरिकल एक टेम्पोरल एनालिसिस करता था 2-3 पैराग्राफ्स में, ये चीज स्टार्ट कैसे हुई, अभी इसका क्या है, जो भी फिलोसॉफिकल एसेज में दिस होल्ड्स ट्रू कि ये अच्छा एक इम्पैक्ट देता है। Then another thing which I used to do, which I think is not everybody does, is that I started with individual level, because Okay. हम पेस्टल एनालिसिस कर लेते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, बट इंडिविजुअल से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे माय फर्स्ट ऐसे व्हिच आई रोट वाज अ शिप इज सेफ इन हार्बर, बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज मेंट What फॉर, ships are meant समथिंग लाइक for? दिस। यस। तो इंट्रोडक्शन भी अगर मैं बता दूं तो आई स्टार्टेड विद एन एनेक्डोट हियर कि लिंक, बट मैंने ऐसे लिंकन वाला यूज किया कि लिंकन इज गोइंग फॉर द इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन और ये वो। तो बाद में मेरे को पता चला कि काफी लोगों ने बुद्धा भी लिखा है, तो थोड़ी नॉवेल्टी तो यहीं पे आ गई। तो ये था सेकंड ऐसे का, मैं शॉर्ट में बता दूंगा, उसमें मैंने एनेक्डोट यूज नहीं किया, मैंने उसमें कुछ ऐसा कर लिया कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दिस 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 एट एन इवेंट। तो फर्स्ट ऐसे में इसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन किया, फिर हिस्टोरिकल बताया कि मतलब क्वाइट लिटरली बता दिया कि स्टार्टिंग में शिप नहीं जाती थी कहीं, बट दे वेंट फॉर द वॉयज, सर फ्रांसिस ड्रेक, वो सब बताया थोड़ा सा यहाँ पे। और फिर उसके बाद इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट किया कि एक यर्क डॉटसन कर्व होता है और ऐसे कर्व्स होते हैं जो बताते हैं कि स्ट्रेस के साथ परफॉर्मेंस पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। तो जो स्टार्टिंग का वो पुश है वो होना चाहिए। तो एक ये इंडिविजुअल लेवल का एनालिसिस हो गया। वहां से सोसाइटी, सोसाइटी प्लस पॉलिटी, सम पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, देन पॉलिटी, बिकॉज हम सोसाइटी का सीधा इकोनॉमी पे आ जाए वो भी थोड़ा अजीब लगेगा, एक फ्री फ्लो होना चाहिए। तो society, then polity, then some governance, and then economic policies, then business part of the economy, then international. And again, one thing which people forget is to give the counter argument. Like we have our main thesis, then we have multiple, like we have a mega thesis, then multiple thesis statements. So one of the important thesis statements become the counter. Like I said कि हर जगह बहुत ही वो होने की जरूरत नहीं है कि शिप समटाइम शुड बी एट द हार्बर, वी शुड बी कैलकुलेटिव। तो उसके 2 पैराग्राफ्स हो गए थे एंड देन कंक्लूजन। तो आई थिंक ये काफी अच्छा वो देता है, जो भी एग्जामिनर है रिस्पेक्टिव ऑफ क्या उनकी सोच है उनको अच्छा ही लगेगा। आई थिंक नहीं, so सेकंड में सिमिलर था। I agree with you in this, and like one of the reasons why I feel a lot of people go for the formulaic approach is just even in this very short, short description of what you wrote, you mentioned some very esoteric things. Like for example, you mentioned the journeys of Sir Francis Drake, and you यस, mentioned the Dodson curve. So, a lot of the people who are generally successful in civil services, they have spent time and they have read a lot of these variety of things राइट, which enables them to then use them in the answers. But then फिर individuals आते हैं and then like कि सर मैं poetry लिख दूं, कैसे लिख दूं, क्या लिख दूं? तो how do you develop this ability to be able to quote so many things? Do you have to have read them all first, or can you just like write them कि 30 pages का एक essay का compilation बना लिया और उसको mug up करके चले गए? How did you do it? What was your take on this? सर आई डिड नॉट प्रिपेयर लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट। Mm-hmm. थोड़ा जो एथिक्स की हम टेबल बनाते हैं, वैल्यूज एंड Mm-hmm. कोड्स, थोड़ा वो था। Mm-hmm. बाकी उसके अलावा एक शुभम कुमार सर के कुछ नोट्स थे जो वो ऐसे के लिए बनाते थे, वो भी ऊपर ऊपर से देखा था। बट हम सब कुछ पढ़ ही लेते हैं, उसके लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। बात है वहां पे क्योंकि हमारे पास टाइम है, यहाँ पे Mm-hmm. टाइम की दिक्कत नहीं आती है ऐसे में। वी हैव अराउंड 30 मिनट्स टू ब्रेन स्टॉर्म। वो Mm-hmm. ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, सब आ जाता है अपने आप, बस बेसिक स्केलेटन अपने पास होना चाहिए। Mm-hmm. तो ये सब हम और वैसे भी लास्ट 5-6 दिन में हम जीएस बहुत अच्छे से रिवाइज करते ही हैं। और फर्स्ट टेस्ट ऐसे होता है, सब कुछ आ जाता है यार, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे मैं बताया यूज कर ली, Mm-hmm. थोड़ा एथिक्स भी आ जाता है। एथिक्स तो आना ही चाहिए ऐसे, इसमें खासकर फिलोसॉफिकल ऐसे में 1-2 पॉइंट होने चाहिए। Mm-hmm. तो वो आ जाता है वो बस। नहीं तो अगर किसी को नहीं आ रहा है वो नोट्स भी बना सकता है। आई थिंक द क्रक्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन इज टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एंड Right. पोएम नहीं I आ रही think है तो पोएट्री नहीं लिखनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। And I think that is the best way to put it, कि you have to do what is essential for you to do. राइट, So
in your journey of civil services preparation, how did you come about this realization कि भाई मुझे ये चीजें करनी है, and like how did you learn to improve in those along the way? Sir, so prelims में, like while I was preparing in 2021 and around that time, Mm-hmm. हम थोड़ा फोमो में आ जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि लोग कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कोई सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, तो आई थिंक इट माइट बी वर्किंग फॉर देम, और मे बी टॉपर्स कोई आए, किसी ने कह दिया 30 मॉक टेस्ट लिखे थे हमने बिटवीन प्रीलिम्स और मेंस, और पहले कुछ 50 लिख दिए, कुछ भी लिख दिया, या प्रीलिम्स के हमने मॉक टेस्ट लिख दिए 100। वी शुड अंडरस्टैंड कि वो उनका एक अप्रोच थी, वो किसी चीज में अच्छे होंगे, किसी चीज में खराब होंगे, दे डिसाइडेड दैट एंड इट वर्क फॉर देम, बट there is a myriad of approaches। देखें एक टॉपर का, देखें अलग अलग होता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्शन ले लो उसका, कि सब रिवीजन को तो सब कहते हैं कि रिवीजन इज किंग, तो रिवीजन तो करना है, और बाकी थोड़ा रीओरिएंट करो अपने हिसाब से। तो मैं क्या करता था, मैं इस फोमो में आके जो एक चीज मिल गई वो कर लेता था। फिर सेकंड प्रीलिम से पहले तो जस्ट कुछ दिन पहले रिजल्ट आता है, तो किसी टॉपर के नोट्स आए, मैं वो पढ़ने लगा, जबकि ये तो सब कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं बदलने चाहिए, Yeah. इवन इफ द कंटेंट इज सेम। थोड़ा साइकोलॉजिकली अलग चीज देखोगे तो थोड़ा ओवरराइट हो जाएगा पुरानी नॉलेज। तो ये सब बेसिक चीजें थी जो मैं फोकस नहीं कर रहा था इन पे, जो भी आ रहा था मैं ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था। एंड एक और चीज थी कि मैं आंसर राइटिंग में थोड़ा, मेरे को लगता था कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सोचता था कि वो करूं, जैसे सेकंड प्रीलिम से पहले मैं पीएसआईआर की कर रहा था, बट मैं मुझे आई थिंक इन हाइंडसाइट आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए थे प्रीलिम्स के, जो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में किए। तो ये होता है थोड़ा, अब किसी कोई आंसर राइटिंग में अच्छा नहीं तो उसको करना चाहिए डेली आंसर राइटिंग, उसको ये नहीं सोचना चाहिए व्हाट विल सम एक्स वाई जेड पर्सन थिंक। सो आई थिंक दिस इज समथिंग So व्हिच how शुड can बी। somebody go about realizing कि भाई मेरी प्रिपरेशन में यहाँ पे कमी है? कैसे? मतलब मतलब वन ऑब्वियसली सिंपल वे इज कि भाई आपने टेस्ट दिया, आपने कहीं से कुछ एवेल्युएट राइट, करवाया, मेंस का टेस्ट दे दो, प्रीलिम्स का टेस्ट दे दो, नंबर अच्छे राइट, नहीं आ रहे, दैट गिव्स यू राइट। वन way of looking at it. But how can someone who is genuinely interested in improving their own preparation and राइट, somebody, let's say, who's doing it by themselves, तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सर मॉक टेस्ट तो है ही, हम्म। एंड वो भी इट शुड बी लाइक टेकन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट द फीडबैक। बट अगर हम थोड़ा इस पे प्लूरैलिटी ले आते हैं, जैसे मैं टेस्ट देता था मॉक टेस्ट मेंस के, फिर थोड़े मैंने आप लोगों से भी वो करवा लिए थे, तो एक दो तीन जगह का वो आ जाता है, तो कुछ एक अच्छा थोड़ा मॉडरेट होके एक फीडबैक आ जाता है। और कई चीजें हमेशा होती हैं कि स्टार्टिंग में आप मान लो पॉइंट टू द पॉइंट आंसर नहीं लिख रहे हो, या स्टार्टिंग में आप एकदम थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस भी होते हैं कि एरो की जगह 1 2 3 मार्क करो, जिससे एग्जामिनर के लिए आसान हो जाए चीजें। कहीं पे कंक्लूजन आप मिस आउट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ कुछ होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप। द मेन थिंग इज टू स्टार्ट डूइंग इट, तभी हम इम्प्रूव होंगे। जितना ज्यादा लर्निंग हो जाए, और थोड़ा हम उससे ज्यादा सोचे, अब ये नहीं कि हर मौक में एक एक चीज सीख रहे हैं वही डाल रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी थोड़ा चेंज होता है स्टेज बाय स्टेज पे। प्रीलिम्स में आर इम्प्रूवमेंट शुड बी गेज्ड मोर बाय looking at the previous year questions. Are we able to understand the language of UPSC and solving those questions right? And the mock test come secondary, I think. And mains में mock tests are good because वहाँ पे evaluation हो रहा है, थोड़ा examiner है वहाँ। वहाँ OMR में तो मशीन है, यहाँ पे एग्जामिनर एक सब्जेक्टिविटी आती है, तो हम कितना खुश कर पा रहे हैं। अगर हम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वहाँ भी काफी चांस होगा, बिकॉज वहाँ भी कोई एग्जामिनर है चेक करने वाला। Yeah. तो एंड इंटरव्यू में अगेन मॉक टेस्ट आर गुड, वहाँ तो सीधा सामने आप बैठे हो, तो थोड़ा चेंज होने में आसानी होती है। So interview I feel is a faster feedback process. Prelims and interview में थोड़ा feedback faster होता है क्योंकि instantaneous आपको result मिल जाता है. Mains में obviously it राइट, can take some time because evaluate होके आएगा, उसके बाद बात करोगे. And this is where I feel a lot of the problems exist. Like for example, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो अब like I was in Delhi and I had worked for most of the institutes in Delhi at some point or the other, कहीं ना कहीं, कभी अन अकेडमी के साथ, कभी विजन के साथ, कभी किसी के साथ, तो मतलब अब तुम सबके साथ काम कर चुके हो, देख चुके हो, और फिर तुम्हें पता है कैसे लोग वहां बैठे हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट आई यूज्ड टू फेस वाज
कि it was very difficult for me to trust the feedback that was being given on my answers. Right. Right, Yes, because sir. मेरे को हमेशा ये होता था कि भैया तुमको कितना आता है, जो मेरे को बता रहे हो क्या है, मैं ऑलरेडी एक बार क्लियर कर चुका हूँ, दिस इज माय रिपीट अटेम्प्ट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माय रैंक एंड लाइक, Right. तो हाउ डू यू ब्रिज दैट ट्रस्ट गैप, ट्रस्ट डेफिसिट? यस सर, वो तो रहता ही है। तो लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ कोचिंग वो हम्म भी फैसिलिटेट करते हैं कि दोबारा चेक करवा लो। हम्म तो एक वो एक चीज है। बाकी एज आई सेड, प्लूरैलिटी, थोड़ा दिखाओ एक्सपीरियंस लोगों को, हम्म सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिखा लो जिनके पास टाइम है, ऐसे तो पढ़ ही लेगा कोई। और यस सर, एंड एज आई सेड, आपका वाला जो था वो भी काफी हेल्पफुल था, बिकॉज जल्दी जल्दी मिल गया। थोड़ा इसमें इंडिविजुअल फोकस भी चाहिए होता है। हम्म कोई हम, जैसा आपने कहा, हमारे जैसा बच्चा ही कोई अगर चेक कर रहा है तो उतना अच्छा वो ना कर पाए। हम्म तो आई थिंक थोड़ा तो मेच्योरिटी लाइक, चाहिए विद इन द एग्जामिनर। on that note, obviously you were associated with us for the mains zero test program जो हमारा होता है, where we essentially allow कि भाई आपने कहीं पे भी और यस भी कोई टेस्ट दिया है, तो you get them to us and we will simply offer you कि भैया मतलब क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्या स्कोप कर सकते हो, आपको और टेस्ट लेने की जरूरत नहीं सर। है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यस सर। मेंटरशिप। तो what was your experience with that particular program? Was it helpful? Do you think there can be some changes in that program? How can we improve is basically what I want to know. Yes, sir, it was helpful. I discussed a couple of GS tests and even an essay test. Even Shashank sir helped quite a lot. Hmm. तो सर इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो देयर वाज अ GS2 टेस्ट जो मैंने दिया था। तो उसमें मार्क्स ही कम दे दिए थे। वो मैंने रीचेकिंग के लिए दे रखा था। तो जब तक वो रीचेक होके आए उससे पहले मैंने आपसे भी डिस्कस किया, आप लोगों से। Hmm. तो द फीडबैक वाज कि इट वाज नॉट दैट बैड। उसमें तो 60 नंबर दे दिए थे मॉक में। तो Hmm. मैं थोड़ा, एक तो प्रिलिमिनरी लेवल पे वही लगा कि ये क्या हो रहा है। Hmm. मैं अ, तो ये था सर। एक तो अच्छा लगता है जब एक जेन्युइन फीडबैक मिल जाता है। बाकी वैसी चीजें थी कि टू डू क्या और कर सकते हैं। क्योंकि जो, मान लीजिए कोई कोचिंग में चेक कर रहा है तो उनको कुछ डायरेक्शंस मिले होते हैं कि ऐसे ऐसे चेक करना है। Hmm. बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग थिंग्स ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, हम थोड़ा इधर उधर जाके और चीजें भी डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा Hmm. और एग्जॉस्टिव बना सकते हैं अपनी एनालिसिस को। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग। बाकी सर, बाकी सर इंडिविजुअल इंटरेक्शन से जो जो होता है कि एकदम टू द पॉइंट, Hmm. जैसे एग्जामिनर चेक करके लिख के दे दे रहा है, लेकिन अभी अगर आप वीडियो कॉल पे डिस्कस कर रहे हो डायरेक्टली, जैसे आपने एक दो सेशन लिए थे, तो आई थिंक Hmm. वो हेल्प करता है ऐसे रियल टाइम एनालिसिस, और समझ आता है चीज। So आजकल मतलब a lot of variety of courses of such sort are available in the market. So let's say that you had to prepare for mains again. What kind of a course would you be interested in joining? कि मतलब now that you know a lot of things about you, about your preparation, राइट। तो लेट्स से कि भाई तुम्हारी रैंक थोड़ी और पीछे आ जाती है और तुम रैंक इंप्रूवमेंट के लिए पेपर दे रहे हो, सो व्हाट काइंड ऑफ कोर्स वुड यू बी इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग फॉर मेंस 23 इफ यू वर गिविंग इट? सर फर्स्टली एथिक्स, आई थिंक एथिक्स में काफी रिगरसली, जैसे मैंने बताया ही कि हम्म काफी कुछ ऑटो पायलट पे चलने लग जाता है वहाँ पे, बिल्कुल लास्ट पेपर होता है। हम्म तो वो आई वुड हैव डन रिगरसली दिस टाइम इफ आई हैड टू डू। अदरवाइज सर ऐसे में आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ करता, दो तीन टेस्ट कर लेता और, हम्म बिकॉज ऐसे वाज गुड। बाकी सर जीएस का अगेन आई वुड हैव गिवन 8 to 12 टेस्ट, बिकॉज नुकसान तो नहीं है आंसर राइटिंग का बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। थोड़ा उस हैबिट में अगर आ जाते हैं। हम्म एंड सर पीएसआईआर आल्सो आई स्कोर 256। सो आई थिंक टू गेट ब्रीच दैट 300 or 290 मार्क्स, आई हम्म वुड हैव फोकस्ड मोर ऑन पीएसआईआर टू। राइट, सो एसेंशियली मोर टेस्ट्स ऑल ओवर with a यस सर। special focus on GS4. यस सर। राइट, तो बाकी आई थिंक रजत, अब coming to the new prelims का pattern which has a lot of people stumped. तो आई वॉन्ट योर थॉट्स ऑन, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गो यूट्यूब, टेलीग्राम, एनीवेयर यू गो, a lot of the people are making a joke about the fact कि भैया 2023 में जो टॉपर आएगा ना अगले साल, वो आके फंडे देंगे कि भैया प्रीलिम्स देखो ऐसे करना था, ये करना था, वो करना था, बट तुम प्रीलिम्स में पेपर में बैठ के देखो और तो भी तुक्के से ही हुआ है तुम्हारा भी। तो व्हाट बिल्कुल आर सर। योर ओपिनियंस ऑन दैट कि मतलब हैज द डिफिकल्टी इंक्रीज्ड और इज दिस अ गुड फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम? मतलब व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन प्रीलिम्स 2023? Yes sir, the difficulty has certainly increased, the हम्म uncertainty has increased,
because and the elimination tricks have been eliminated. Eliminated. तो सर क्योंकि स्टार्टिंग में हो जाता था, अगर आपको हम्म 3-4 स्टेटमेंट्स है उसमें से एक पता है कि सही नहीं है, हम्म तो फिर भी आप 2-3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते थे, हम्म 1 2 3 2 3. या So, but now you have to know at least 3 out of 4 statements to हम्म be to feel good about attempting that question. Like educated guess नहीं कहलाएगा वो, नहीं तो. हम्म तो I think tough तो हो गया है, and I don't know if it is a good thing or not. Uh, दोस्त लोग बोलेंगे ये क्या बोल दिया, but I think it is, if it is bad, it is bad for everyone. So हम्म we have to reorient certain things. For हम्म example, the number of questions, अब 95 attempt करने का point नहीं है, we can even go till 75 हम्म जो mocks में लोग practice करेंगे. And since elimination tricks have do not work, and the kind of questions, if one sees the questions, they require depth of understanding. हम्म So I think another change should be to look at depth, not width of study. So that will help. जो हम interview stage पे करते भी हैं, हम्म कि interview stage तक आते आते, तो a number of my friends who gave the interview are scoring good in GS, just because of the fact that news and जो static portions है और जो basic conceptual, जो bell of the ball जो होती है, वो अच्छे से पता है उन्हें. तो जैसे इस बार No, कई like क्वेश्चंस this आए. exact thing I've heard so many times over the last week now, because obviously a lot of people we were associated with for the interview guidance PT22 हमारा जो program था, and like we got good successes there. About 50 plus people associated with us have been selected this year. You obviously were also associated with us for mains, but a lot of the people who did not make it to the final list, they said this very same thing that you are telling me right now, कि जो इंटरव्यू की तैयारी करी थी पिछले 3-4 महीने से, पेपर पेपर पढ़ रहे थे, रैंडम राइट. चीजों में घुस रहे थे, क्योंकि इंटरव्यू में यही यस. होता है ना, तुम रैंडम चीजों में घुसते हो कहीं कहीं कोने में जाके, क्योंकि इंटरव्यू टेस्ट अ लॉट ऑफ डेप्थ, एंड ऊपर ऊपर से पढ़ने का वहां पे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता. तो दैट्स व्हाट दे एग्जैक्टली सेड, कि वो रैंडम रीडिंग की वजह से दे स्कोरिंग लाइक वेरी गुड इन GS1. यस सर. बट दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन ऑफ CSAT. मतलब डिड यू चेक द CSAT का पेपर फॉर प्रीलिम्स? No, sir, I did not check, but I have heard that it has become tough. It has become lengthier. So Hmm. people who used to attempt, uh, like people like me from engineering background, who used to attempt only math Hmm. questions and only a couple of English questions, they are facing problems Hmm. because पहले क्या होता था कि हम गिनते नहीं है, जैसे जीएस में हम गिनते रहते हैं, थोड़ा ट्रैक रखते हैं कि कितने क्वेश्चन कर Hmm. लिए हमने. सीसैट तो हमेशा लगता है कि ये तो अच्छा ही है हमारा, तो उसको हो ही कई लोग गिनते जाएगा. ही नहीं है. फिर वो पेपर के बाद पता चलता है कि 40 ही अटेम्प्ट किए हैं, और उसमें भी मैथ्स के अगर ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इस टाइप के आ गए, Hmm. लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है कुछ टाइम से, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा बॉर्डर लाइन इशू भी हो जाए. तो Hmm. आई डोंट थिंक सीसैट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. अब बस लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई टफ आएगा अगले साल, पिछले साल से भी. तो Hmm. जस्ट डबल डाउन ऑन योर एफर्ट ऑन सीसैट. पास्ट के क्वेश्चन ट्राई टू डू इट इन one and a half hours Hmm. only instead of 2, just to check that वो स्ट्रेस में आप कितना कर पा रहे हैं. और इंग्लिश जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उस पर भी फोकस होना चाहिए, Hmm. बिकॉज वो कोचिंग की आंसर कीज में तो कुछ भी हो, लेकिन एक यूपीएससी की जो इंटरप्रिटेशन होती है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के एन एस्पिरेंट कैन डू देम, एंड Hmm. काफी अच्छा अप्रोच भी बना सकते हैं. जैसे छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर क्वेश्चन, फर्स्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन. Hmm. उसमें लिखा है कि क्रक्स ऑफ द पैसेज, देन यू लुक एट द पैसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रक्स, Hmm. देन इम्प्लीकेशन, इन्फेरेंस. तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होके हो जाता है, ये जल्दी Hmm. जल्दी सही भी हो जाता है. Yeah, so why do you think CSAT is important overall? मतलब क्योंकि देखो हर साल obviously a lot of people find it very very tough to clear CSAT. I personally feel CSAT is essential. मतलब I'll share my Yes, sir. reasoning, but do you think CSAT is important as an exam in the civil services process? Uh, yes, sir. I think, sir, because थोड़ा aptitude check होता है इससे, Mm-hmm. and aptitude is not something which is the property of only engineers. Mm-hmm. Everyone should try to improve his or her aptitude. आराम से हो जाता है सर वो. इसमें भी दो चीजें हैं, एक मैथ्स वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट है. इंग्लिश वाला पार्ट, आई थिंक जो कॉम्प्रिहेंशन है, इट व्हेन वी अटेम्प्ट देम, वी
we are trained in being objective, of leaving a preconceived notions behind, because वो पैराग्राफ ऐसे होते हैं कि अगर हम कुछ नोशन के साथ जाए हम कुछ और मार्क करेंगे, हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली उस पैराग्राफ को देखना है और जो उसने पूछा है वो बताना है। तो एक दो चीजें तो ऐसी भी हो जाती है, ऑब्वियसली इंग्लिश गेट्स इम्प्रूव, इट इज अ कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड, तो वो भी अच्छा है, वो चाहिए होता है। देन मैथमेटिकल स्किल्स, थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स तो चाहिए। अब सीसैट अगर हट भी जाए तो इंटरव्यू में वो चेक कर लेंगे एनालिटिकल स्किल्स इन सम वे और अनदर। आई थिंक एक छोटे लेवल पे ही होता है, एंड इट इज ऑब्वियसली वी हैव टू स्कोर 66 मार्क्स नॉट 100। तो थोड़ा इट ऑल्सो टेस्ट स्ट्रैटेजी मेकिंग, थोड़ा ज्यादा पेपर है, दो पेपर है, ऐसे तो मेंस में भी कुछ पेपर्स हटा सकते हैं टू ईज इट आउट। बट ये दीज थिंग्स आर ट्रेनिंग अस। मतलब आई हैव बीन ऑन द अदर साइड, बट सीनियर्स ने हमेशा यही एडवाइस किया है कि वी शुड नॉट crib at that type of exam pattern, but we should orient our strategy वो, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आता है। And that's true. I think that is the difference between a fixed mindset and a growth mindset. Fixed mindset में वही हो जाता है कि Right. this is an unfair paper, मतलब ये कैसे Yes, पूछ लिया, ये 10th लेवल नहीं है। Now I agree with that कि भाई this is unfair कि आप बोल 10th लेवल रहे हो और फिर पेपर आपका हायर लेवल पे है। आप बोल दो ना मेरे को 12th लेवल का मैथ दोगे, आप बोल दो मेरे को कि भैया इंजीनियरिंग लेवल मैथ दोगे, फाइन, मतलब एटलीस्ट आई बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट आप बोलो 10th लेवल और कुछ और दो और फिर बोलो कि नहीं नहीं है तो ऐसे ही है। सो दैट पार्ट आई अग्री विद इज अनफेयर, बट एट द सेम टाइम आई फील yes sir. सीसैट इज एसेंशियल। क्योंकि यार अगर तुम आईएएस आईपीएस बन भी जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी भर तुमको फाइलें पढ़नी है, Yes, तुम्हें फाइलें पढ़नी है, तुम्हारे सामने पिटिशन आने हैं, एंड right. इफ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ कि भैया आपको कोई भी कुछ भी नंबर दिखा के चला गया और आपने भैया छोड़ दिया कि भैया कोई और देख लेगा इसको, तो भाई फिर Yes, आप इफेक्टिव सर्विस में भी नहीं रह पाओगे। क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यू एज अ फील्ड ऑफिसर, मतलब जब आप डीएम हो, एसपी हो, या मतलब रेवेन्यू सर्विसेज में आप डिप्टी कमिश्नर हो, इन ऑल ऑफ दीज पोस्टिंग्स, अगर आप नंबर्स से कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब पर्टिकुलरली अगर आईआरएस वगैरह किसी में आप चले गए, आप नंबर से कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी तो पूरी नौकरी नंबर्स पे खेलने yes वाली sir, है। definitely. तो ये एक बेसिक फिल्टर टेस्ट है, क्योंकि भाई इतना तो होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बंदा देख के नंबर्स को घबरा जाए। बिकॉज लाइक लेट्स से यू Yes गो sir. इनटू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब भाई नंबर्स ही हैं, देयर इज नथिंग एल्स। एंड वहां Yes पे sir. इतने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दैट लाइक अब जैसे बोला जाता है ना कि भाई द गुड अकाउंटेंट कैन टेल अ स्टोरी थ्रू द नंबर्स। तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू बी एट दैट लेवल, आपको सीए लेवल का मैथ वैथ नहीं चाहिए, बट आपको एटलीस्ट ये तो लगना चाहिए ना कि भाई ये नंबर में कोई झोल है। ये देख के अगर आपको दिख जा रहा है तो बस Yes आप sir. इफेक्टिव कर पाओगे, आपको ये नहीं बताना पूरा कि भाई कितना झोल है, कितना परसेंट, कितना 0.00 तक जाना है। बट अगर आप Definitely. ये कह रहे हो कि ना मेरे को इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट लो, ना मेरा मैथ का टेस्ट लो, और फिर आपने जिंदगी भर फाइलें पढ़नी है, आपने नंबर से डील करना है, तो दैट इज नॉट एन इफेक्टिव वे आई फील ऑफ गोइंग अबाउट सेलेक्टिंग द पीपल टू मैन दोज ऑफिसेस। Yes sir. And sir, just to add to this, the type of questions बहुत limited ही होते हैं। ऐसा नहीं कि मैथ्स में they are asking calculus और ऐसा कुछ, ये नंबर सिस्टम में ही थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, थोड़ा कॉम्बिनेट्रिक्स में। तो people should treat this as an exam, not a test of their IQ। और इसमें क्योंकि कई मतलब अलग अलग होता है, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी बहुत अच्छा कर देते हैं कभी कभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जस्ट बिकॉज वो इसको एग्जाम की तरह, जो भी एग्जाम में रिक्वायरमेंट है वो नहीं करते। वो तो पता है हमें कि ये चार पांच थीम्स हैं मैथ्स में, थोड़ा और इस बार जितना टफ हुआ और टफ के लिए प्रिपेयर हो जाओ, इससे ज्यादा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ऐसा पूछ रहे हैं 11 12 से भी, हो सकता है 11 12 का कुछ कुछ पूछ लिया जो बहुत टफ है, जो अभी मैं भी नहीं कर पाता, हो सकता है, मैं तो दिया नहीं। बट लेकिन अब हमें पता है तो हम और ज्यादा टफ चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो इन थीम्स के अंडर आता हो। Right. So I think we'll wrap up this episode. One last question I सर, want to ask you, Rajat, before you go. And this is a question that I very frequently ask during the mock interviews from a lot of people also. Ki there obviously the context was different, but I want your opinion on how do you think AI tools will be, changing how people prepare? Do you think it will change or do you think it will not? What is your understanding of AI with civil services preparation?
Yes, sir. Sir, so I also use a bit of Chat GPT during my interview preparation. तो उसमें तो it does help because सीधा हमें डैप के बारे में जानना है कि उत्तर प्रदेश में ये तो थोड़ा बहुत it helps. But suppose for mains वहाँ पे भी अगर हम सीधा well cooked answer ढूंढें Chat GPT से, we might even get such an answer. बट आई थिंक जो एक प्रैक्टिस होती है, जो एक वो होता है जो हम गूगल पे जाके देखते हैं, फिर वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट सम एंसिलरी थिंग्स, वो नहीं होगा. हम डायरेक्टली उसमें फीड कर रहे हैं और मिल रहा है, तो हम इम्पेशेंट भी हो जाएंगे. और किसी भी जगह बहुत हेल्प कर सकता है चैट जीपीटी. एंड इवन आई नो वेरी लेस अबाउट इट, मे बी ये यूपीएससी में इस प्रिपरेशन में भी कर दे. बट विद माई प्रेजेंट नॉलेज आई थिंक यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ लॉट मोर अबाउट पेशेंस दैन. एंड ऐसे एआई टूल्स हमेशा इम्पेशेंट ही बनाते हैं, तुरंत मिल गया. इससे अच्छा थोड़ा जाओ, थोड़ा टॉपर्स की कुछ टेलीग्राम चैनल देखो या कुछ यूट्यूब पे देखो. कई बार तो यूट्यूब पे सुन सुन के जा जाके देखना पड़ता था कोई स्ट्रैटेजी पॉइंटर, या या मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर जस्ट गूगल पे जाके न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स पढ़ रहे हैं, वहां से कुछ मिल रहा है, कुछ नया भी मिल जाता है. आई थिंक अगर एआई वैसा कुछ फैसिलिटेट कर दे तो इट माइट बी हेल्पफुल. बट आई थिंक अभी बहुत ज्यादा नहीं भागना चाहिए, एटलीस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स को. Right, so I think I mostly agree with your take over there कि इंटरव्यू में Sir. obviously it is very helpful. क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में Yes, you sir. need that random diversity जो कि मतलब जनरल Right, आपको सोर्सेस से right, नहीं मिलेगी. right. But at the same time for mains is not that helpful for the very simple reason that mains में आपको इतना information process करना है कि अगर आपको well cooked, क्योंकि like this is something that I recommend to people जो मेरे को आके बोलते हैं कि सर उस सब्जेक्ट के तो उस टॉपर के नोट्स हैं, मैं वही कर लूं क्या? मैंने कहा Right, कर लो, बट what you have to keep in mind is that it is not the notes but the process of making the notes which is important. क्योंकि जब तुम वो नोट्स बना रहे हो तब तुम चार डिफरेंट right. सोर्सेस को दिमाग में रख के उसको निचोड़ Yes, निकाल के जब तुम पेपर पे करोगे तो इट विल ऑर्गेनाइज थिंग्स इन योर हेड एंड इट इज मच मोर लाइकली दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल इट इफ यू हैव डन दैट. बट इफ आई हैव रेड सम बुक 4 times 5 times, क्योंकि अगर किसी के भी नोट्स में उठा के बना दिया मैंने पीडीएफ तो भैया मेरे लिए तो किताब ही होगी ना, मैं तो स्टोरी बुक की तरह ही पढ़ रहा हूँ. तो yes, वो sir. रिकॉल वैल्यू ऑब्वियसली उसका थोड़ा कम हो जाता है. एंड तो तो चैट जीपीटी भी ऐसे इतना ज्यादा अभी केपेबल हुआ नहीं है मेरे ख्याल से. अगर आप इसके वो देखो, मेरे को तो अभी भी लगता है कि इसको और ट्रेन होना पड़ेगा. नहीं, ट्रेन जैसे नहीं. सो अपने जो नाउ टॉप. द डिफरेंस यस, इज कि नाउ यू गेट एक्सेस टू प्लगइन्स एंड चैट जीपीटी कैन एक्सेस द इंटरनेट. नाउ चैट जीपीटी कैन एक्सेस वुल्फ्राम अल्फा के बारे में आपने सुना होगा. तो राइट, वुल्फ्राम राइट, अल्फा इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज इंजन जो राइट. कि मतलब कैलकुलस वगैरह करके वो दे देता है. तो चैट जीपीटी हैज बीन इंटीग्रेटेड विद वुल्फ्राम विद अ लॉट ऑफ इंटरनेट सर्चिंग विद अ लॉट ऑफ पीडीएफ रीडिंग. तो पहले जो चीजें नहीं होती थी कि भैया मैंने लिंक दे दिया और उसको बोला कि भैया पीडीएफ का समरी दे दे मेरे को, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कैन बी डन नाउ. So somewhere I feel it will be helpful, but again it's यस, something worth exploring. And I feel अगले साल 2024 के जो टॉपर्स आएंगे डेफिनेटली सम पीपल विल देयर बी सेइंग कि नहीं नहीं बहुत हेल्प किया. बट राइट नाउ बिकॉज ऑब्वियसली इट्स मतलब 6 महीना यस. हुआ है, वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, मतलब प्लगइन्स का एक्सेस सबको राइट, नहीं है, तो a lot of things राइट, are still there. राइट, राइट. But I think this will also change administration, and you're going in and at a very, very, brilliant time because as a young individual, आपने second, third attempt में घुस गए हो, AI just आया है, you're a little more comfortable with it than the people who are already in service. So I feel a lot of changes are yet to come, and I think young officers like you will be the ones spearheading them. So best of luck on your new journey, Rajat. थैंक यू सो मच सर. And thank you for giving us your time. It was a pleasure to have you here. थैंक यू सर. सेम. Okay.